हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फ्लक्स। अगर आप लोग देख ले तो कोई भी ऐसा कम्पिटिटिव टेस्ट नहीं है जिसमें सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हों। इस वीडियो को एंड तक देखने से आप लोग A to Z जितने भी सवालात हैं सोलर सिस्टम के बारे में सारे सीख जाओगे। ठीक है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले हम बेसिक लेवल से एडवांस की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक लेवल में सबसे पहले यही सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज़ सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम क्या है? प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटरॉइड्स एंड कॉमेट्स विच आर मूविंग अराउंड द सन इज कॉल्ड सोलर सिस्टम। जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, ये जो सूरज के गिर्द घूमते हैं, इस सारा सिस्टम ये क्या कहलाता है? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम सबसे पहले किसने वो डिस्कवर किया? पोलिश एस्ट्रोनॉमर निकोलस कोपरनिकस डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम इन 1532। तो डिस्कवर किसने किया था? निकोलस कोपरनिकस ने। और दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन किसने प्रेजेंट किए थे? तो जर्मन एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोलॉजर जोहानस केपलर गिव द लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन। ठीक है, जोहानस केपलर ने दिए थे। Our solar system has 8 planets, that is Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. And let me add one thing for your content information here, that before 2006 our solar system was consist of 9 planets, but currently the Pluto is considered as a dwarf planet. ठीक है, इसको जो है ना सोलर सिस्टम में काउंट नहीं किया जाता। तो currently solar system is consist of 8 planets. These 8 planets have been divided into 3 groups. Terrestrial planets or rocky planets, इसमें क्या आता है? Mercury, Venus, Earth and Mars. Gas giants planets, Jupiter and Saturn, and ice giant planets. तो इसमें क्या आता है? Uranus and Neptune. नेक्स्ट हमारे साथ क्या है? सन के बारे में सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, द सन इज़ द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। बहुत से एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। तो आंसर क्या है? सन इज़ द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। नेक्स्ट क्या है? इट्स साइज इज़ 13 लाख टाइम्स एज दैट ऑफ द अर्थ। अगर 13 लाख टाइम्स हम अर्थ के साइज़ को ले लें तो ये एक सन के बराबर होता है। सन इज़ द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ। ज़मीन जो के करीब तरीन जो सितारा है वो हमारे साथ क्या है? सन है। The sun is the main source of all energy on the earth. ये भी एक बहुत ज़्यादा repeated MCQ है। ठीक है, main source of energy sun. The sun is composed of 71% hydrogen, 26.5% helium and 2.5% other gases. Then hydrogen and helium are the main gases present in the sun. ठीक है, इसमें हाइड्रोजन, हीलियम और अदर गैसेस प्रेजेंट है, लेकिन मेन जो गैसेस हमारे साथ क्या है? हाइड्रोजन एंड हीलियम सन में प्रेजेंट होते हैं। सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज अप्रॉक्सीमेटली 5505 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द टेम्परेचर ऑफ द सेंटर इज अराउंड 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये भी बहुत ज़्यादा दफ़ा पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ द सन। तो बाज़ जगहों में 6000 दिया गया है, लेकिन एग्जैक्ट ब्रैकेट क्या है? 5505 डिग्री सेंटीग्रेड। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन और 15 करोड़ किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ये भी पूछा जाता है, डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। Light takes about 8 minutes and 20 seconds to reach the earth from the sun. ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मिनट्स में दिया जाए तो 8 मिनट, अगर सेकंड में दिया जाए तो 8.20 सेकंड्स, 20 मिनट्स, 8 मिनट 20 seconds. Now closest planet to the sun is Mercury. Mercury is the smallest planet in the solar system. सोलर सिस्टम में छोटा तरीन सियारा है। It doesn't have any satellites. ये कोई सैटेलाइट इसके साथ नहीं है। ठीक है, कोई मून वगैरह नहीं है इसका। Mercury is the closest planet to the sun. और नेक्स्ट हमारे साथ क्या है? इट इज़ द सेकंड हॉटेस्ट प्लैनेट आफ्टर वीनस इन आवर सोलर सिस्टम। नेक्स्ट हमारे साथ क्या है? Mercury is the second densest planet after Earth. ज़मीन के बाद जो है ना सबसे ज़्यादा भारी जो सियारा है वो क्या है? Mercury.
There is no water on this planet. इस पर कोई पानी वगैरह नहीं मौजूद. Mercury planet has no gases like CO2, N2, H2, O2. That's why there is no existence of life on this planet. ठीक है, life gases मौजूद नहीं है तो life नहीं है. Mercury revolves around the sun very quickly than Earth. That's why 1 year on Mercury takes approximately 88 Earth days, whereas Earth takes 365 days to orbit the sun once. ठीक है, ज़मीन की एक साल 365 दिन और मरकरी के एक साल 88 डेज के बराबर है मरकरी. नेक्स्ट हमारे साथ क्या है? बट मरकरी रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस वेरी स्लोली देन अर्थ. Because of it, Mercury is Mercury takes much longer than a day on Earth. 1 day on Mercury is 58.646 Earth days, or 1407 hours, 30 minutes, and 14 seconds long, while a day on Earth is 23 hours, 56 minutes, and 4 seconds long. ये भी याद रखने की बात है. नंबर सेकंड जो क्लोजेस्ट प्लैनेट हमारे साथ क्या है? वीनस इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ एंड सेकंड्स इन द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ. ठीक है, ज़मीन के करीब तरीन सियारा और सूरज से दूसरे नंबर पे करीब तरीन सियारा. वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, आल्सो कॉल्ड द ब्राइटेस्ट प्लैनेट. ठीक है, वीनस इज़ आल्सो नोन एज इवनिंग स्टार एज वेल एज मॉर्निंग स्टार. और वीनस इज़ आल्सो नोन एज गॉडेसेस ऑफ beauty. Venus in size and mass just like Earth. Therefore, Venus is also known as Earth's twin or Earth's sister. तो Venus के बारे में बहुत ज़्यादा ये इंफॉर्मेशन याद रखना ज़रूरी है क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. नेक्स्ट क्या है? Venus spins or rotates clockwise or in the opposite direction on its axis, unlike other planets in our solar system, except Uranus. ठीक है, ये clockwise rotation करता है. Venus revolves around the sun from east to west. Therefore, in this planet, the sun rises in the west and sets in the east. ये भी एक unique type की information है about the Venus planet. Also, for your current information, the same phenomena do happens in Uranus too. It rotates clockwise or in the opposite direction on its axis, and the sun rises in the west and sets in the east. नेक्स्ट हमारे साथ क्या है? देयर इज़ नो वाटर ऑन वीनस बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंट ऑक्सीजन. लाइफ डजंट एग्जिस्ट ऑन इट्स सरफेस. नेक्स्ट हमारे साथ जो प्लैनेट है अर्थ है, जिसमें हम खुद रह रहे हैं. अर्थ इज़ नोन एज वाटरी प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर ऑन इट. आप लोग खुद देख सकते हैं 70% वाटर है, 30% लैंड है. ठीक है, the planet has a large quantity of oxygen for which life exists on this planet. Moon is the only satellite of this planet. Earth is the largest and densest of the inner planets. Inner planets में सबसे densest जो है ना हमारे साथ क्या है? Earth planet है. It takes 23 hours 56 minutes and 4 seconds to rotate on its axis. ठीक है, ये exact time है जो अर्थ लेता है अपने एक्सिस रोटेशन के लिए. अर्थ टेक्स 365 days 5 hours 48 minutes to revolve around the sun. और एक साल का चक्कर इतने टाइम में कंप्लीट करता है. अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. देयरफॉर हियर ऑन दिस प्लेन द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. ठीक है, ये भी याद रखना चाहिए. अर्थ इज़ मेड ऑफ रॉक्स एंड स्टफ. चट्टान और स्टफ से बना हुआ है. मार्स नेक्स्ट जो प्लैनेट हमारे साथ क्या है? 4th नंबर. मार्स इज कॉल्ड रेड प्लैनेट. द सॉइल ऑफ दिस प्लैनेट contains huge amount of iron oxide. Because of it, the color of this planet is orange reddish. Phobos and Deimos are 2 satellites or moons of Mars. Deimos is the smallest satellite of our solar system. Next क्या है? Mars revolves around the sun from the west to east. That's why the sun rises in the east and sets in the west on this planet, just like Earth. Mars takes 687 Earth days to revolve around the sun and 24 hours 37 minutes to rotate or spin on its planet. Then 1 year on Mars is 687 Earth days and 1 day is 24 hours 56 minutes. Next, the planet has a
thin layer of atmosphere with nitrogen and argon gas. The tallest mountain in the solar system, Olympus Mons, a shield volcano, is 21 km high and 600 km in diameter, is situated on this Mars planet. It's about 3 times the height of Mount Everest. ये भी एक इंतहाई यूनिक टाइप of information about Mars planet. There are signs of liquid water in the form of ice on Mars. Thus, life can exist on this planet. ठीक है? Mars takes its name from the Roman god of war, Jupiter. नेक्स्ट हमारे साथ है जुपिटर. जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. ये भी एक बहुत ही रिपीटेड जनरल नॉलेज MCQ है जुपिटर के बारे में. नेक्स्ट हमारे साथ क्या है? जुपिटर इज़ आल्सो नोन एज winter planet because its average temperature is very low. It's about -148 degrees centigrade. Jupiter has approximately 67 known satellites, and Ganymede satellite of Jupiter is the largest satellite in the solar system. ठीक है? ये भी एक इंतहाई interesting information about Jupiter. Jupiter is the fastest spinning satellite in our solar system. It rotates on its axis in just 10 hours. But Jupiter takes 12 years to revolve around the Sun, which is quite astonishing information about the Jupiter. Next हमारे साथ जो planet आता है वो है Saturn. Saturn is the second largest planet of our solar system. Jupiter के बाद second largest planet क्या है? वो है Saturn. Titan is the largest satellite of Saturn and the second largest satellite in the solar system after Ganymede, satellite of Jupiter. Saturn is the only ring planet in the solar system. Ring planet, Saturn. Remember, this is very, very important MCQ. And these rings are made up of with dust, rock and ice. Next हमारे साथ क्या है? Italian astronomer Galileo Galilei first discovered this Saturn planet with a telescope in the year 1610 AD. Saturn could float in water because it is mostly made up of gas like helium, which is used in balloons. That's why you cannot stand on Saturn. ठीक है? सारा गैस है तो इस पे कोई कड़ा नहीं हो सकता. Saturn revolves around the sun very slowly. A year on the Saturn is more than 29 Earth years long. 29 साल के बराबर है एक साल Saturn का. Saturn spins on its axis very fast. A day on Saturn is just 10 hours and 42 minutes long. ठीक है? इतना shortest day है Saturn का और 29th years इसका एक साल के बराबर है. Next हमारे साथ क्या है? Planet Uranus. Uranus is the third biggest planet of our solar system after the Jupiter and Saturn. Jupiter और Saturn के बाद third largest planet क्या है? Uranus. Uranus is about 4 times the size of Earth. ज़मीन की 4 गुना साइज के बराबर इसका साइज है. This planet appears greenish in color because of methane gas present in its atmosphere. ठीक है? Uranus is the 7th planet in the distance from the Sun. ठीक है? 7th नंबर पे है इसका distance. Uranus was discovered by Sir William Herschel in 1781. ठीक है? William Herschel ने इसको discover किया था. Uranus rotates or spins from east west on its axis, which is opposite to the other planets except Venus. Because on this planet the sun rises in the west and sets in the east. ठीक है? Venus और Uranus के बारे में ये यूनिक इन्फॉर्मेशन याद रखना. Uranus takes time to revolve around the sun 84 Earth years long. ठीक है? 84 Earth years लेता है एक रोटेशन के लिए. But this planet spins on its axis very fast. Uranus completes its rotation on its axis about 17 hours and 14 minutes. ठीक है? Around its axis. Next and last planet of the solar system हमारे साथ क्या है? Neptune. Neptune is the farthest planet from the sun in the solar system. It is the 8th planet in distance from the Neptune in size, mass, composition and rotation is very similar to Uranus. Therefore, Uranus and Neptune are called twin planets. एक दूसरे के बिल्कुल related हैं तो इसको twin planets consider करते हैं. Neptune. Neptune in next हमारे साथ इसमें क्या है? Neptune is blue in color. This planet contains sufficient methane gas. The temperature on the surface of this planet is very low, -200 degrees centigrade. सबसे जो coldest planet है वो क्या है? Neptune है.
Neptune revolves around the Sun very slowly. That's why 1 year on the Neptune is approximately 165 Earth years long. But it rotates on its axis very fast. As a result, 1 day on Neptune is 16 hours and 6 minutes long. ठीक है, सबसे जो ज़्यादा वक्त लेता है वो भी यही नेपच्यून लेता है. 165 years long around one rotation around the Sun. Thank you for watching the video. If you are new to our channel, please do hit the subscribe button to receive the notification for the upcoming videos, because we are uploading regularly very informative videos to help you out in your preparation for the different competitive exam. Good luck. Bye bye.